frequency domain radiations. And we took a simpler case. Simpler case था जिसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है it's periodic. We have a point charge at position RP in XY plane, and here at some point R we are trying to find the field. और चूंकि ये periodic है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो field है उसमें जो frequencies है they would be the multiples of this fundamental frequency. Let's call it omega naught. So omega naught जो है इसकी frequency of revolution. तो इसका मतलब ये है कि इसके जो fields हैं they can be written as Fourier series. तो एक तो ये है जो थोड़ा सा मुश्किल है कि आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने पॉइंट सोर्स का फाइंड किया हुआ है, यू ट्राई टू एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ अ Fourier series. लेकिन उससे थोड़ा रिलेटिवली आसान है if we try to do it with potential, because potential is a little bit simpler. So that's what we regain, that we have a magnetic vector potential. अब इस फ्रीक्वेंसी का फिजिकली सेंस की समझ आए कि इस फ्रीक्वेंसी का उस टाइम की क्या ताल्लुक है जो हमने पहले निकाली थी जो पावर और टाइम का फंक्शन था, ये दोनों आपस में फिजिकली कैसे कोरिलेट हैं? इसलिए कि यहाँ पे हम रेडिएशन फाइंड कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी ना भी होती है, अगर जो आपकी ट्रेलिंग मोशन है, इवन देन वी वुड हैव अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन जनरल, वी कैन, राइट? और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड वी विल एक्चुअली डू दैट पार्ट एज वेल. सो एसेंशियली देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम. द फर्स्ट इज दैट आपके पास ये ए है, सो यू सिंपली टेक इट्स Fourier transform. दैट्स द जनरल थिंग. Okay, V define kappa R F. So एक तो ये है कि आप इसका Fourier ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे गेट फ्रीक्वेंसी. लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है इसके अंदर इनहेरेंटली एक फ्रीक्वेंसी है which is its frequency of revolution. So it means कि और ना सिर्फ, और इसको आप इससे भी देखें, ये जो v है क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ टाइम? ये r जो है क्या ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम भी है? ये कापा भी, तो ये सारे फंक्शन पीरियोडिक हैं और तीनों का पीरियड भी सेम है. सो इट मीन आप ये भूल जाए कि ये फंक्शन कहाँ से आया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे. अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन है व्हिच हैज सम पीरियड t at some fundamental frequency omega naught, whenever you find its Fourier transform, अगर आप Fourier transform भी लें, you get a frame of delta function. तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो I'm not sure कि आप लोग Fourier transform कितना है, तो I'm not following that. अगर आप बुक में देखें इसी प्रॉब्लम को उसने उस तरह से किया in a train of delta. जो नोट्स हैं, by the way मैं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप नोट्स थोड़े सा आसान है, जो चैप्टर 8 के मैंने नोट्स आपको दिए हैं, तो अगर उनको मुताबिक चले तो since this has a period omega of frequency fundamental frequency omega naught, it means that this can be expressed as a Fourier series फॉलो कर लो, क्योंकि फंक्शन है वो पीरियोडिक है. तो अगर आप Fourier ट्रांसफॉर्म भी फाइंड करेंगे, इवन देन इट्स अ ट्रेन ऑफ डेल्टा. तो इक्विवेलेंटली अगर हम Fourier सीरीज मेथड यूज कर रहे हैं, तो वी कैन अज्यूम ए priori that all the frequencies would be the multiple of omega. Okay, so this is it, and where the Fourier coefficient
is ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी। मैं कोशिश करूँगा ई जो है उसको ऐसे लिखूँ, दिस इज ई, और जो एल है उसको थोड़ा ऐसे करते हैं। Anyway, so this Fourier coefficient is 1 over t, 0 to t, a of rt dt. So let's substitute these things here. One minus n dot theta ये r है, ये kappa है, अब in general अगर आप exactly करना चाहते हैं, you have to evaluate this and tackle exactly. But if we assume far field, then we can simplify. For example, these charges are going around a circle on some faraway star. Then even on these charge distribution, let's say on a micro scale, अगर हम थोड़ा सा दूर field को observe कर रहे हैं, then this approximation is going to be valid. So this approximation is when r is much greater than r, where rp is a periodic function. Let's say this is radius of the circle. So since it's a circular motion, rp is this. And in the far field, just to show it, draw the structure like this. So this is r. So this is r minus rp, and you can see that this magnitude is roughly equal to r, this whole magnitude, minus this part, and this part is nothing but projection of this thing over this. This is the direction of n hat. So this is roughly n hat, and वैसे तो ये होता है. So this is n hat, but when we are far away, these two lines are almost parallel. So then this n hat and this, they are both almost the same. I can approximate in the far field n hat to be like this, even though it is actually equal to this. So this is dot. So we can approximate it like this. Approximate this thing, and we can find the velocity and on p dash dot like this, and then I can write Kl as T. So you can get this thing out.
let's switch time from t to t prime, and then I can write this thing as, so since we have t prime minus t is equal to 0, which means that and this we have already computed, this and this, because this r is like this, so this gives us d3 by dt prime, this is v and theta, and this can give us t is equal to t prime plus r over c, but this r is approximated as r minus n hat dot r e over c. So we can approximate t with this thing. So जो exponential term है उसमें हम रख देते हैं prime like this, और जो dt है उसके जगह पे आ जाएगा dt prime into this, और ये फैक्टर जो है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो है r minus r उसको मैंने जस्ट r से ही अप्रॉक्सीमेट कर दिया, तो ये होगा t prime minus t plus r over c equals 0, क्योंकि ये f of t prime है ना हमारा, और we are evaluating this thing as f of t prime equal to, ये हमारी कंडीशन के साथ ही कंडीशन होती है when we get the to solve the delta function, so this thing was there, क्योंकि ये f of t prime में ये delta की आर्गुमेंट लेकिन मैंने जो फाइनल सॉल्व Okay, so this is what we have. और नीचे मैंने आप देखेंगे r minus r p जो है उसको सिर्फ r से अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं लिखा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज अ स्मॉल पार्ट, इट डजंट रियली मैटर दैट मच, लेकिन फेज में जो है वो हमने वो पार्ट लिखा है क्योंकि फेज में स्मॉल पार्ट जो है दैट आल्सो प्लेज पार्ट। अब इन जनरल इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व दिस इन अ स्पेशल प्लेन, क्योंकि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो प्रॉब्लम जो है उसमें ये एजीमुथल सिमेट्री है, ठीक है, इसको आप व्यू देखें, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, एंड सपोज the loop is in xy plane, so the tension here and here and here, they are all same because it's independent of r. So instead of evaluating it everywhere, I can just evaluate phi is equal to 0. उसके लिए हम ये करते हैं, we can take this I can substitute this x hat, और मैं सारे को spherical coordinate पे convert करने लगा for easier understanding of this structure. x hat जो है इसको हम अगर spherical coordinate में लिखें, so this is sin theta cosine phi, so the n hat which is in this case simply r hat, x hat plus sin theta sin phi y hat plus cosine theta z hat, और ये n hat की जगह पे हम रख देंगे r p जो है वो ऑलरेडी हमारे पास वो है, उसमें भी x hat और y hat है, और इस जगह पर भी यानी पहले तो ये n की जगह पे आप ये कर, ठीक है, उसके बाद ये r p है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो x hat और y hat है सबको हमने रिप्लेस कर देना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से,
एक तो अब हम फाई जीरो करते हैं, तो फाई जीरो करेंगे यहाँ से काफी टर्म खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फाई जीरो कर लें और एक्स और वाई एन की वैल्यूज कर दें यहाँ से। इसी तरह से ये एन डॉट आर पी, एन डॉट आर पी बाय द वे क्या होगा, अगर ये एन है और वो आर पी है तो एन डॉट आर पी तो हम बगैर कहीं पे जाए लिख सकते हैं। सो एन डॉट आर पी इज रो, इसको आप रेक्टेंगुलर पे कर रहे हैं और उससे स्फेरिकल पे कर रहे हैं, मतलब किसको आप ये तो मैंने एन लिखा है, ठीक है। तो हमेशा की से सीधा सीधा एन को ऑन हेड ही रहेंगे, ठीक है, बस यूं इतना करेंगे, ठीक है। या इसको पहले यूं कर लेते हैं, एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करके क्योंकि और हेड भी आ रही है, तो इस तरह लिखने का ये फायदा है, इसका तरह वो आर पी से ले लेंगे हम डॉट, ये एन डॉट आर पी हम वैल्यू कर देंगे। तो या तो फिर पहले वो एक्स वाई को मैं स्फेरिकल पे कर लूँ, बाद में एन डॉट आर पी होगा, इसको मैंने एक्स वाई जी में लिख लिया, तो अब एन डॉट आर पी क्या वहाँ नीचे XYZ की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं सब कुछ स्फेरिकल में लेके जा ठीक है, रहा आरपी हूँ, तो इसमें एक टर्म ये है एन डॉट आर पी, ये कंक्लूड कर दें। या तो आर पी को भी पहले स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो या आप ये एन लिखा हुआ है तो इसका कर लें और फिर वो वैसे ही वो यूनिट फैक्टर से डिपेंड होगा, ये आ जाएगा x डॉट x कोसाइन ओमेगा t प्राइम साइन थीटा और फाई जीरो कर देते, ये जीरो हो गया, ये फाई जीरो किया तो ये भी जीरो हो गया, सो ये आ गया। फाइव जीरो से पहली टर्म हाँ वो जो वो तो वन साइन वाई नहीं है। ये वन हो गया, तो साइन थीटा x है, ये जीरो हो गया और ये कोसाइन थीटा जीरो, और इस n का वैल्यू वो आर पी से डॉट हो गया, उसमें x और y है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा अनफॉर्चुनेट सब कुछ हम कर रहे हैं डायग्राम को सिंपलीफाई कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हम देखेंगे कि डायग्राम फिर भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ आएगा, मैं अभी लिखता नहीं हूँ, एक्स वाई जी कर देंगे, इधर आ जाएगा एक्सपेंशन ये होगा ओमेगा नॉट एल आर ओवर सी, बल्कि ये तो डायग्राम से बाहर ही आ रहा है, ये जो पार्ट है एक्सपेंशन ये होगा ओमेगा नॉट एल आर ओवर सी ओवर आर, ये बाहर आ जाएंगे, एक्सपेंशन योटा ओमेगा नॉट एल ई प्राइम और एन डॉट आर टी की जगह पे आ जाएगा रो दिस थिंग इनटू दिस माइनस रो ओवर सी, और बल्कि इस तरह करते हैं ओमेगा नॉट में इसके साथ ओमेगा नॉट ई प्राइम और यहाँ भी ओमेगा नॉट इनटू कोसाइन ओमेगा नॉट ई प्राइम, और ये जो है तो ये ओमेगा नॉट है और आर बी में भी उठा क्या। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट विल बी फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी इनटू समथिंग प्लस फंक्शन ऑफ कोसाइन ओमेगा नॉट टी, इस तरह से करते हो।
ये जो टर्म, क्योंकि अब ये x y की जगह पे पुट करेंगे तो जो भी थीटा या फाई डिपेंडेंट वो सारे कांस्टेंट हैं, दे विल गेट आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो ये वाले टर्म पास। तो ये जो हमारा इंटीग्रल अब आ गया है, जिसमें वी हैव आइदर साइन और कोसाइन प्लस कुछ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन वेरिएबल, और ये एक्सपोनेंशियल में अगर आप t प्राइम और फिर इसका कोसाइन एंड देन वी हैव a dt प्राइम, यहाँ पे आप ओमेगा नॉट लगा लें तो ओमेगा नॉट नीचे लगा लें, तो एसेंशियली वी हैव इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप दैट sin थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा l थीटा माइनस rho ओमेगा नॉट ओवर c। सो लेट मी define बीटा as this thing। तो इस तरह के जो इंटीग्रल हैं दे आर एक्चुअली बेसल फंक्शंस। So sin theta iota L theta minus beta cosine theta beta. So this is actually a Bessel function of nth order L beta cosine theta, और अगर यहाँ पे cosine आ जाए तो वो इसका डेरिवेटिव। So we get integral in terms of Bessel function, और इसमें एक जो है असल में टर्म आती है थीटा डिपेंडेंट और एक आती है फाई डिपेंडेंट और एक टर्म आती है आर डिपेंडेंट। तो एसेंशियली जो ए वेक्टर है उसमें थीटा फाई और आर डिपेंडेंट है। So let me just write the result. So the theta component है a l theta, it is mu naught e 4 pi r function beta k l r cot theta j l L beta sin theta, sorry वो कॉल भी करके sin theta, और जो phi component है is iota mu naught e rho omega naught, यहाँ पे भी rho omega naught e है, और 4 pi r iota k l और j l prime l beta, और कुछ है alpha। So I don't expect you to remember these integrations or maybe do them in the book. ये sin थीटा होगा। हाँ ये sin। So important चीज ये है कि we get these components of this vector function. In a simple problem, you can actually do it analytic little bit easier as well. For example, if you imagine rho to be very very small, you can neglect this part and then this integral can easily be evaluated. ठीक है, अगर फर्स्ट आपको एक प्रॉब्लम है या एग्जाम में उसमें जो इंटीग्रेशन होगी वो आसान है। So here I'm trying to do a bit general case, and for small rho you can actually find it from here as well. If this argument is small, this can be approximated very easily. For L1 this is argument, and for other L it's 1 minus L. Anyway, so once we have this integration, we have all these three components of vector function. इसमें जो k l है, it is L omega naught over c. So these are the components of the vector potential. Now in the far field we know that B is
del cross A in general, but in the far field, this can roughly be approximated as iota KL KL N cross. क्योंकि ये देखिए ये फंक्शन जो है इट हैज दिस प्रीडोमिनेंट टर्म एक्सपेंशन होता है KL और इस तरह की टर्म का जब आप लेते हैं कर्व सो दिस होता है KL कम्स आउट और चूंकि इसकी डायरेक्शन और है so this is n hat which is the direction of r hat. So roughly in the far field the magnetic field is n cross A. And अगर यहाँ से आप देखें since this n is r, so जो इसका iota KL, so this n is r hat, so this is AL theta, AL phi, AL r, ये तीनों कंपोनेंट्स। तो r क्रॉस r तो जीरो देगा इसलिए मैंने वो लिखा भी नहीं था और r क्रॉस थीटा जो है वो आपको फाई कंपोनेंट दे देगा और जो r क्रॉस फाई है वो आपको थीटा कंपोनेंट दे देगा मैग्नेटिक फील्ड। So it means that the theta component of magnetic field for the nth mode is iota KL AL phi and BL phi is iota KL AL. So जो उसका थीटा कंपोनेंट है वो यहाँ से आ जाएगा r क्रॉस फाई इज थीटा, तो ये AL phi की और जो उसका फाई कंपोनेंट है इट विल कम फ्रॉम हियर r क्रॉस थीटा इज फाई, सो फाई कंपोनेंट इज iota KL AL. So once we have these components of magnetic field, we can write the power radiated for each mode. So this we know is given by E cross B over mu naught, and since we can write E in terms of B like this, इसको आप U भी करके लिख सकते हैं R square R hat dot E cross H अगर आप H की फाइंड E जो है एक तो हम वो फुल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं माइनस del phi minus partial A partial T, लेकिन हम मैक्सवेल इक्वेशन से भी देख सकते हैं that since del cross H is epsilon naught partial E to partial T, and in the far field since time dependence is exponential iota omega naught LT, तो ये बन जाएगा iota omega naught L E और जो del cross है ये बन जाएगा KL R hat cross. So for each mode far field में जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये मिली है, जो पार्शियल T है उससे जो मैंने ओमेगा नॉट L लगा दिए क्योंकि फील्ड सारे पीरियोडिक हैं और फिर टाइम डिपेंडेंस है एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा नॉट LT, जब टाइम डेरिवेटिव होगा तो आयोटा ओमेगा नॉट L जो है वो बाहर आ जाएगा, बल्कि वो मैंने माइनस लिखा हुआ और डेल को उसी तरह मैंने होता कि और हैट से रिलेटेड, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ट्रू। सो दिस KL आयोटा से कैंसिल हो गया, KL है ओमेगा नॉट L ओवर C, तो इसका मतलब है E आ जाएगा माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन ऑफ C और हैट। तो दिस इज E, अगर इस E को अब यहाँ पे पुट कर दें so you get R square epsilon naught C
आर हैट क्रॉस, ये माइनस साइन है तो एच को पहले लिख लेते हैं और ई को, और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आएगा आर इंटू एच डॉट एच और दूसरा आएगा एच इंटू आर डॉट एच, बट सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर, because we are assuming that in your direction of propagation the magnetic field is perpendicular to that, so this r dot h will be 0, so this will be r dot r1, so r square epsilon of c at LF component and we have the component of h over here, so dp over d omega, मैं ये जो ये r square जो है ये al और al phi में नीचे तो देखें 4 pi r है, वो r square से कैंसिल हो जाएगा और ये जो बाकी कांस्टेंट है सारे, let's call them c1 and eventually we will have only kl square into al theta square plus al phi, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कंपोनेंट है फाई और दोनों का मॉड स्क्वायर हो, ये भी मॉड स्क्वायर, तो al थीटा और al phi की वैल्यू वहां से पुट करें आप तो ये आ जाएगा सम कांस्टेंट, ये जो kl है ये था ओमेगा नॉट l और c, तो ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो जो एक्चुअल चीज बचेगी वो l स्क्वायर होगा और al थीटा है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा j l स्क्वायर l बीटा sin थीटा प्लस इसके साथ बीटा भी है जे एल प्राइम स्क्वायर एल बीटा, ये जो है ये वो मॉड स्क्वायर है तो कुछ तो ये हमारे पास जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब अगर थोड़ा ब्रेव बने तो यू कैन फाइंड द टोटल पावर बाय इंटीग्रेटिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द होल सॉलिड एंगल, देन यू कैन फाइंड द टोटल पावर और नोट्स का देखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स है उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग। So total power is actually the integral और इसमें जो कोई phi dependence कहीं भी नहीं है, so essentially this becomes 2 pi dp over d omega sin theta d, क्योंकि इसमें जो d phi में इंटीग्रेशन है वो आराम से 2 pi आ जाएगी, क्योंकि इसमें phi dependence कहीं भी नहीं है, सिर्फ थीटा डिपेंडेंस है और थीटा इंटीग्रल नहीं। तो ये हमने कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला जो है वो ड्राइव कर ली है, और अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट फॉर अ सिंपल केस वी कैन से मच। द सिंपल केस इज व्हेन दिस बीटा इज स्मॉल, व्हेन बीटा इज स्मॉल दैट दिस इज अप्रोचिंग 0, तो आप jl को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं l बीटा sin थीटा से, एंड व्हेन दिस इज स्मॉल दिस विल गो अवे, so you will have l square and l square time dependence। so और चूंकि ये l बल्कि l स्क्वायर l4 होगा, तो इसका मतलब है कि l1 वाली टर्म डोमिनेट है और जो l बढ़ता जाएगा it's going to go down। और स्मॉल बीटा, okay, for small beta this is approximately 0, this is roughly 0, and this is approximated by l beta sin theta, this is the derivative, this is the actual Bessel function।
तो L square roughly L4 बन रहा है, तो this is small beta पे well actually it's now depends on theta as well, so we have to see what theta and जो total power P है that is given by this, अगर आप थीटा पे इंटीग्रेट कर लें तब इसकी डिपेंडेंस जो है वो चेंज होगी। तो मैंने जो किया है एक छोटा सा फोटो इसको जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो जितनी देर में ये नीचे जाता है आप जो प्रॉब्लम है वो ध्यान में रखें। वी हैव point charge going in a circle in xy plane, theta is the angle with the z axis, phi is the angle in this plane, so there is no phi dependence, and we have this angular distribution of power and we have this total distribution of power. और ये जो आपके सामने power लिखी है, this is for the nth mode, and remember in a Fourier series there are infinite number of modes theoretically. So by the way हम वेलकम में कुछ दिनों तक एक वर्कशॉप से अरेंज करेंगे मैथमेटिकल, आप लोग जो वो इंटरेस्टेड हैं वो सीख अगर तो ये है बहुत ये बीटी उसी तरह से बीटा है, ठीक है, लेकिन इस दफा बीटा की डेफिनेशन डिफरेंट है, रफली सेम है क्योंकि बीटा इज rho omega naught over c and this is tangential velocity and this is gm gamma. So this dpl is a function, this function dp by d omega. So this is function of L and theta. So it's L square cotangent theta Bessel J L beta sin theta whole square. So it's a square of cotangent and Bessel both together plus L square beta square into Bessel J. So now ये जो ब्रैकेट में जो चीज लिख रही है ना Bessel J L minus 1 minus Bessel J L plus 1, this is actually the derivative of Bessel, because the derivative of Bessel function J L is simply J L minus 1 plus J L plus 1 over 2 I think, या minus sign is sorry. So ये मैंने derivative इस तरह से लिखी है and there is this
डिवाइडेड बाय 4, ये हाँ जो नीचे 2 है उसका स्क्वायर होके 4 है. So this dPL is a dPL by du. और ये जो PL है नीचे, this is n integrate, this is numerical integration of dPL into sin theta for theta 0 to pi. So this PL is simply the total power. Total power जो है जो तमाम एंगल्स पे रेडिएट है. Okay, so पहला जो मैंने प्लॉट किया है तो ये मैंने एक ही प्लॉट में L1 के लिए, L3 के लिए, L5 के लिए, L7 के लिए प्लॉट किए, 3-4 प्लॉटिंग और थीटा goes from 0 to 1. And this is the plot of the dPL by du power distributor. So that's why there is a theta function. So now when beta is 0.1, you see there is only plot available for L is equal to 1. Okay, so let me see if I can change. Okay, so now this is L1 and you see on the horizontal is theta 0 to 180. Okay, so this is 0 to 180. And at theta 90 we have very small radiation. Radiation is the maximum at theta 0 and theta 180. अगर U डूब जा रहा है इस structure में radiation maximum है. So if you have let's say a spinning star which is charged, so ये जो rotation है it's producing more radiation in this direction and in the backward direction. For L is equal to 1 mode. L1 mode is a fundamental mode. क्यों radiation की frequency जो है वो omega naught. और for small velocity like beta is 0.1, all you get is a fundamental mode. बाकी जो है ये मैंने L1 और L3 किया है, ये स्पेशल नहीं है, L2 का करें तो वो भी दरमियान में नहीं है. Let's now increase this beta to 3 और 5 के लिए नजर आ रहा है. वो नीचे ऊपर तो 0 की फील्ड नहीं है. तो पहले इसको कर देते हैं. Okay, so this is L1 fundamental mode. This is now the mode at the second frequency. और इसमें देखें जो maximum radiation है, they are in the plane of the loop. ये फंडामेंटल मोड जो है वो स्ट्रक्चर में ज़्यादा रेडिएट कर रहा है और जो सेकंड हार्मोनिक है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी डबल है वो स्ट्रक्चर में ज़्यादा रेडिएट कर रहा है. और इसी तरह ये L3 है, ये L5 है. Let's take beta to 8. Okay. Now the other mode, the radiating even more. मोड अगर चेंज कर देते हैं ये 1 इसको कर देते हैं इसको 3. So this is 2, this is 3 I think, this is 4. So अगर आप let's say हम देखना चाहते हैं 10 वाला blue है, let's say 15. So they're all radiating very hugely in the plane of the loop. By the way, अगर मैं 30 वाला so 30 वाला भी फिर कम होगा. जब नंबर बढ़ रहा है ये 40 वाला वो कम
तो ये हो रहा है कि पहले मोड की पावर कम है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम होना शुरू होता है। लेकिन इसमें चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पावर नजर आ रही है, लेट्स सी इफ वी कैन, सो देयर इज अ प्लॉट एट अ स्पेसिफिक एंगल। ये अभी भी डिफरेंट उसी का है, डिफरेंशियल पावर का प्लॉट, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अब जो है वो ये थीटा 90 पे, कैन यू सी? तो ये जो डॉट्स लग रहे हैं ये एक L1 पे, फिर L2 पे, फिर L3 पे, L4, और ये थीटा 90 पे है, ठीक है? अगर आप किसी और थीटा पे, लेट्स से थीटा 0 पे देखना चाहते हो, 0 is trouble for other, so let me just make it like 10 degrees. So इसमें एक ही पॉइंट है, ये सेंटर में नहीं, सो ये जो L1, ठीक है, जहाँ पे वो हमें नजर आ रहा है, बाकी सारे जो हैं वो इस एंगल पे काम है। हम देख भी रहे हैं ऊपर वाली फिगर से कि स्वाय मोड नंबर 1 के जो यहाँ शुरू नहीं हो रहा उसको ऊपर करके है, तो स्मॉल थीटा पे सिर्फ मोड 1 रेडिएट करता है, बाकी मोड्स रेडिएट। मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि मेरे ख्याल में प्लॉट है टोटल पावर। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड पावर। So this is of course independent of theta. Now you see the L is equal to 1 mode total power, फिर 2, 3, 4 और उसके बाद decay. So the highest energy is being emitted in roughly mode number 4. But the other important thing is कि फर्स्ट करें उसकी फ्रीक्वेंसी रोटेशन है 10 मेगाहर्ट्ज, तो रेडिएशन जो है वो आपको इवन 30 टाइम 10 मेगाहर्ट्ज 300 मेगाहर्ट्ज पे भी मिलेगी। इफ इट इज लाइक 1 गीगाहर्ट्ज 30 गीगाहर्ट्ज पे भी रेडिएशन। सो देयर इज अ होल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रम एक्चुअली डिपेंड्स ऑन बीटा। अगर मैं बीटा को 0.95 करूं, स्पेक्ट्रम पहली बात है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया कि L1, L2, L3 और मैक्सिमम कहीं आ रहा है 15 के करीब। वैसे मैंने गामा क्या है इसमें? गामा है 3.2, दिस इज गामा 3.2, सो 3 का स्क्वायर होगा रफली 9, सो it goes to a maximum which is proportional to gamma. Higher the gamma, higher the value of the maximum value, and then trails off. This is L, number of modes. So x-axis is number of modes. So L1 fundamental frequency, L2 second harmonic, L3 third harmonic. ये डिक्रीज करता है आपने certain mode, डिक्रीज क्यों करता है? डिक्रीज करना तो we can postulate very easily. You see, everything should radiate close to zero at infinite frequency. Makes sense, right? So, at some time, everything has to turn around. अगर आप classical electrodynamics की बात करें, मैं जो quantum processing की बात करूँ, because there the radiation comes from the transitions. ठीक है, तो at least in classical electrodynamics और वैसे भी physical situation में when you go to infinity things should go down. So maybe important question ये है कि ये बाकी मोड्स पे क्यों करते हैं? अब एक चार्ज है वो W नॉट से जा रहा है, so should we see frequencies only at W नॉट? Yes and no. Yes इस सेंस में कि अगर आप प्रोसेस को थोड़ा लाइट्स ऑन करो, अगर विजुअलाइज करें तो है क्या? अगर तो चार्ज स्टेशनरी है तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, ऐसे ही है। और अगर ये चार्ज स्लो 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 मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हो रहा है, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी से होगा? जो ओमेगा नॉट है।
कि जितने टाइम में ये चेंज करता है उतने ही टाइम में यहाँ पे फील्ड चेंज होगा इफ इट इज मूविंग वेरी स्लो। और दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक लिमिट कि रफली जो फील्ड में चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होने से आ रहा है। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े उसकी थोड़ी चेंज होती है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स काइंड ऑफ अ डाइपोल एंड then the next thing is quadrupole and so on. So we are getting different compounds. अगर ये जो current distribution है इसके हम harmonics find करेंगे हम dipole at one frequency, quadrupole at another and so on. ये कैसे ये idea कौन सा आता है कि ये जब you're increasing the velocity या frequency तो उससे dipole quadrupole क्यों आए? क्योंकि जो dipole quadrupole या दूसरी components हैं they are just like Fourier series कि हम किसी भी current distribution को we can express them in a certain basis. So one basis is the basis of these monopoles, dipoles and so on. And then there are other bases like a frequency basis. So that's one way of visualizing it. इस वजह से हमारे पास बाकी modes आ रहे हैं because there are In general वैसे जब हम dipole या quadrupole की बात करते हैं तो उसमें usually we are interested in spatial distribution of current. और जो करंट की अपनी फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेडिएशन की वो चेंज होती है। डाइपोल इज लाइक अ balloon up and down, then quadrupole, four balloons and so on. इस सूरत में यहाँ पे जो हो रहा है इट्स काइंड ऑफ अनदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज एसेंशियली द फोरियर सीरीज टाइप कि हमने अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वी सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज फार एज सम लाइक फिजिकल थिंग कि अगर हम थोड़ा इंट्यूटिवली इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट आई थिंक इज वुड बी अ बिट ऑफ स्ट्रेच। सो essentially we can say that that's how nature behaves in this because we are solving Maxwell equation and it's coming from that. It's so complicated telling it in intuitive way is essentially walking you through the same mathematical step as I would do intuitively. जो intuition है वो usually वहाँ पे applicable होती है जहाँ पे आप problem से लेके solution तक simple steps में जा सकते हैं and at least you can approximate the problem to go in simple step. So that's the intuition. Okay, intuition दार है कोई gut feeling या इस तरह की कोई अनलॉजिकल चीज तो नहीं है। तो इंट्यूशन उसी वक्त हमारी डेवलप होती है जब कोई प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और उसी इंट्यूशन को अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस करें सो यू हैव मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स एसेंशियली फॉलोज थ्रू द लॉजिकल स्टेप्स। सो इस केस में अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स नॉट इजी टू मेक दिस प्रॉब्लम मोर सिंपल दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट क्योंकि इसको ज़्यादा सिंपल करना कैसे हम कर सकते हैं इफ़ वी कैन सिंप्लीफाई द इंटीग्रल। और इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इफ़ वी कैन मेक मोर अप्रॉक्सीमेशन रिगार्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल रॉ या उसमें और भी है जितना आप उनको अप्रॉक्सीमेट करते जाएंगे उतना इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी यू गेट क्लोजर टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। ये तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है जिसमें से पॉइंट चार्ज ऑसिलेट कर रहा था और क्या ऑपरेशन हो सकती है क्योंकि अभी सिंपल की काफी So suppose you have a bunch of charges going in a cell. Especially if we think about a synchrotron where charges may be going around at almost every point in the cell, right? Then in general you get a incoherent sum of radiation at any observation point. लेकिन हर चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंटली ऐसे ही रेडिएट कर रहा होगा अनलेस कि हम वो भी कंसिडर करें कि जो रेडिएशन दूसरे चार्जेस से निकल रही है उनको अपने ही उसी रिंग के अंदर जो चार्जेस सर्कुलेट कर रहे होंगे क्या असर होगा एंड दैट्स आल्सो अ रियल थिंग। अगर हम एक जैसे एक लूप ऑफ जैसे कर लेते हैं रिंग ऑफ चार्ज लेते हैं अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा होगा तो तब भी इसकी इस तरह के हम रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं तब भी होगा हाँ अगर तो फर्ज करें वो एक्सेलरेटेड नहीं है पहली बात तो हम लेते हैं कि इट्स नॉट एक्सेलरेटेड अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो एक्चुअली
that can be a good homework problem to check that why the electric field is only 0 and there is only a magnetic field, and since the electric field is 0, अगर हम वो electric field actually is not 0 but it's almost like a static electric field, that there is no radiation. Okay, if we have a loop of current on a neutral wire, we only have magnetic field and no electric field. लेकिन अगर हम सिर्फ let's say के charges देते हैं, एक loop of charge है जो कि move कर रहा है, it's different than a loop of current. पहले तो ये हम देख रहे हैं, क्योंकि loop of current में we are imagining कि net charge density at each differential element is 0. We are taking neutral wire, so electron जो है वो move तो कर रहे हैं, but they are moving in a background of positive force, so that the net charge is 0. So that's why there is no electrostatic field. So इस केस में अगर हमारे पास एक continuous current है circular loop में, and the current is not being compensated by positive charges, then in general there will be both electric and magnetic fields. But the uniform current will then not produce radiation. Most likely because the radiation from each different elements they cancel out each other. इस point और इस point से जो radiations हैं they will cancel out. But when they are accelerated, if there is accelerated current, then actually this is also interesting thing. जो loop है उसके अंदर जो current है वो अगर uniform भी हो, it's still accelerating in one sense. But actually, if we have a uniform current in a loop, the electric field, the electromagnetic radiation is 0 until the current is oscillating. If we have oscillating current, then we get electromagnetic radiation. But if it's a uniform current, then there is no radiation, even if it's a band. It's most likely because the fields add up. So I'll check. Actually, I'll give it maybe another word problem for you. आपको होमवर्क में ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे वो है कि I haven't solved and probably there are no solution for that. There are always a couple of problems. So you can struggle with that. Okay, so अब तक हमने जो frequency domain relations की हैं, they are for simple case. When we have a periodic situation, but in general, that's not the case. So let's now come to the general case that can be applied to every situation. For example, हमने initially देखा we can have linearly accelerating charges, we can have arbitrarily accelerating charges. So for all those situations, we can find the frequency spectrum of the radiation. और आप देख भी सकते हैं जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि frequency spectrum जो है that can be used to find information about the source. जैसे आप हार्मोनिक से परिचित हुई है, you can find the fundamental frequency of rotation, right? And from the spectrum, you can find the value of beta. So if you have beta and you have the value of fundamental rotation, you can find the radius. So you see, while sitting here on Earth, we can get a lot of information about, let's say, a certain star, maybe billions and billions of light years. And from radius and omega naught, you can find possible value of magnetic field on that star. And from these information, you can get other gravitational information about that particular star. So similarly, to detect radiation from different types of charges in different types of motions, we can look at their frequency spectrum, and then we can go in reverse and get information about the charges. This is one of the fundamental ways in which particles are detected in LHC, because the detector, many detectors, not all, are essentially based on finding frequency spectrum. Because from frequency spectrum we can find the acceleration and velocity
and if we can have independent measurements about masses, we can get a lot of information. And similarly, for charges that are entering, charge particle entering atmosphere, they are also radiating, and from the frequency spectrum, we can compute their velocities and other information. So frequency spectrum is actually the key to getting information about the particles. क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, we saw that we have an electric field of a particle. So we have E4 pi epsilon naught c n minus beta dot kappa r. So this is the spectrum, right? So this you see depends on theta, phi, t, and many other things. And since it varies at different times, so it's hard to go back from this function to different properties. But if we can have a spectrum, then we see radiation now, we get the frequency spectrum in our instrument, and essentially we get information about all times. The frequency spectrum comes by integrating over time. So if you are going this way, you might have to wait very long to get the full information about the particle than if you compute the Fourier spectrum. So we can find the Fourier spectrum simply by finding the Fourier transform, which is given this way. So this is, once we take this in diagram, we have our Fourier of the electric. So let me do it for this arbitrary electric field right now, and we can then do a couple of examples. I will do an example of linear charge, linearly accelerating charge, and in chapter 8 notes, he has actually computed the same spectrum that we did from Fourier series by taking the Fourier transform of the fields, electric field of our charge in a circle, and came to the same conclusion. And before we do that, let me just remark that the actual electric field is very rapidly oscillating. And usually, when we measure electromagnetic radiation, if we are in a small frequency region, for example, a few megahertz or gigahertz, we can follow the electric field almost exactly. Because the electric field is oscillating so slowly that in our antennas, the charges, the electron respond to that very easily, and our electronics is fast enough to track the motion of electronics up to few gigahertz. Once we go beyond few gigahertz, let's say into terahertz and then hundreds of terahertz, which is optical range, the X-rays are provided, then we don't have yet instruments to follow the motion of charged particles right. So then, instead of electric field, we are usually interested in other quantities which are essentially proportional to the square modulus of electric field, the total power that is delivered by the radiation. So usually that's why you will see that even here and in our previous work, we have again trying to find this dP by d omega, the angular distribution of power. Even though if we could have instruments, we could simply have worked with electric field. Electric field is also angular dependent, right? But to go to this because in most cases we can measure the power but not the field directly. So once we have a time dependent thing, usually we are
interested in dP by d omega, which was we call energy. So this power is energy per unit time. So this dP by d omega is d square E by dt du. And when we talk about Fourier spectrum, so instead of looking for energy per unit time, since we don't have time here, we look for another quantity, which is energy per unit spectrum width, maybe per unit centimeter, or per unit wave number, or per unit of whatever unit you want to assign to the spectrum. So we usually define a quantity which is called intensity as the energy per unit frequency. And similarly, if we want to find the angular distribution of this is nothing but the epsilon d omega dx. So this means that if we are looking for total energy, this total energy, this is the power integrated over the full, so this is the dP by d omega, angular distribution. अगर आप इसको टाइम और एंगल सॉलिड एंगल में इंटीग्रेट कर लें, you get the total energy. And since this P is dE by dt, so this is also now, and this P this power we know is proportional to E mod square. So this power is C epsilon naught R square this dP by d omega, right, is E mod square. ये हमने पहले भी देखा था. Now we have this theorem which we call Parseval's theorem, and I hope that you are already familiar with this thing. It says that if you have a time domain function and you compute its total energy like this, you can also compute the same thing from its Fourier spectrum by integrating over frequency. So total power you can compute by integrating over time or by integrating over frequency is Fourier transform. It's actually not that difficult to prove. अगर आप ये E of t जो है इसकी जगह पे इसका E of t का फॉर्मूला पुट कर दें, E of t is equal to integral E of omega exponential omega t, और इनको मल्टीप्लाई करें इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ, you can work out that this comes out. So since this is E into E star, so this E is E of omega exponential omega t d omega, right? And then E star is E star
omega double prime exponential minus iota and omega double prime t. So ये मैंने E स्टार लिख दिया, इसका E स्टार ले लें और ये प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लिया है ना इसका, और ये वैसे ही है। अब देखें ये डी ओमेगा प्राइम पे है, ये डी ओमेगा, और यहाँ पे सबका डी टी भी है। अब ये जो इंटीग्रल है टी वाला, ये पहले वैल्यूएट करना है, तो इसमें एक टर्म है ये एक्सपेंशन माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी वाली, और एक है एक्सपेंशन आयोटा ओमेगा डबल प्राइम टी वाली। इनको कंबाइन करें तो बन जाएगा एक्सपेंशन आयोटा ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डबल प्राइम इनटू टी। तो डी टी पे जब इंटीग्रल होगा तो याद आएगा डेल्टा ऑफ ओमेगा प्राइम माइनस ओमेगा डबल प्राइम, और टी इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। और फिर दो इंटीग्रल में से कोई एक भी कर दें, एक इंटीग्रल खत्म कर दें क्योंकि डेल्टा फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शन में ओमेगा प्राइम में तो ओमेगा पुट कर दें, and you get this. This 2 pi comes because I think in this Fourier transform there's a 1 over 2 pi square इसके साथ और 1 over 2 pi square इसके साथ, तो ये 1 over 2 pi. So we can compute the total power either integration in time or integration in frequency. So it means I can replace this thing with the this thing, and then this quantity is so ये जो कि टोटल एनर्जी है उसका मतलब है ये जो चीज है ये क्या होगी, this would be di by d omega which is energy per unit wavelength per unit frequency, क्योंकि अगर आप इसको frequency और angle में इंटीग्रेट करें you get the total energy. So this is the angular distribution of the energy, so E mod. No, this is for all frequency. This is energy per unit wavelength, per unit frequency, per unit solid angle. So this I is energy per unit frequency. और अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं, when we are working with time domain, we computed this dt by d omega, which is c epsilon of r square e square, and this is energy per unit time per unit solid angle. This is energy per unit wavelength per unit solid angle when we are working with frequency domain fields. Okay, thank you. So we'll begin with this.